initially when cities grow, I mean when cities come into being, they don't have that much waste. The population is less. So waste management is not one of the first things that a city is thinking of, because you don't have that much waste to consider. But waste production is growing at a rate of 4% every year. And so the pace at which we are generating waste is much higher than the pace at which we are able to manage our waste. So it's very simple. The more the waste, the more you have to manage the waste. So this is when I think, I'm not saying right now it's still a mess, but I think in the last few decades we should have started thinking very clearly about how we want our cities to be. Do we just want them to look pretty and clean, or are we thinking about how efficiently we manage our waste? दिल्ली के 3 कूड़े के पहाड़ पिछले कई दशकों से दिल्ली की छवि पर एक काला धब्बा रहे हैं। हालांकि कचरे के पहाड़ से निपटने का काम एमसीडी के दायरे में आता है, लेकिन दिल्ली के लोगों की खातिर हम एमसीडी के साथ मिलकर काम करेंगे और तीनों कूड़े के पहाड़ों का अंत सुनिश्चित करने के लिए हर संभव सहयोग प्रदान करेंगे। So if you talk about the numbers which are available in the public domain, Delhi is generating nearly 11,000 metric tons of waste every day, out of which nearly 50% is getting treated, and 50 to 55% of the waste is ending up into the landfills. The 3 dump sites in the city, which is Okhla, Bhalswa and Ghazipur. और जो 3 कूड़े के पहाड़ हैं, ये 9th आइटम है स्पेशल, 3 कूड़े के पहाड़ हैं। इन 3 कूड़े के पहाड़ों को दिसंबर 2024 तक हम साफ कर लेंगे। स्पेसिफिकली नगर निगम को इस बार हम 850 करोड़ रुपए एक्स्ट्रा दे रहे हैं एज अ लोन। If I talk about the informal waste picking sector, you have the kuda walas, which are the waste pickers, kabadi walas, the small scrap dealers. All this is a huge informal sector of recycling which is there in India, and all these waste pickers, who are actually the poorest of the poor and the most backward classes, they have no other option for livelihood. They don't have any other skills. So only the very poor people will actually become a waste picker. These people live around a landfill because that is their source of livelihood. मैं आया था अपने खाला के साथ आया था और उम्र था उस टाइम 12 साल। हम तब थे 8-10 साल के थे, तब से आए। गांव कलकत्ता। कम से कम 15 साल हो गए। कोई घूमेगा, कोई फिरेगा, घर पे खाना की दिक्कत होगा तो बोलेगा। जो घूमेगा क्यों, फिरेगा क्यों, तो थोड़ा खत्ता भेजा, कुछ पैसा होगा, गुजारा हो जाएगा। नहीं, ये पूरा जो नीचे जो देखा उससे खड्डा था। कम से कम मेरा तरह 4-5 बंदा खड़ा होगा, इतना खड्डा था। सब अपना अपना कोई भी माटी खरीद के डाला, कोई एक कहीं पे माटी ला के डाला, ऐसी करा। बारिश के टाइम कम से कम 2 फुट तक यहाँ कीचड़ हो जाता है और चला नहीं जाता, पानी भर जाता था बारिश के टाइम में। हाँ, घर में कई बार पानी आ जाता है। फिर 2-3 दिन बाद फिर घर पे हम वहाँ से मतलब घर से निकाल जाते हैं। घर पे हम रह नहीं पाते, इतना पानी आ जाता है। फिर क्या मतलब कहीं ऊँच जाएगा देख के हम रह लेते, फिर जैसे पानी सूख जाते हैं साफ़ सुथरा करके हम घर पे जाते हैं। बारिश के टाइम में बहुत दिक्कत हो जाती है, यहाँ पानी निकालने कोई जगह भी नहीं है। So while we can criticize and say that why do they live here if it is so hazardous, they have so many injuries because they pick waste from the landfills or dump sites with their bare hands. There are sharps lying there, it infects them. Then
a daily inhalation of all those toxic fumes in a landfill, polluting the soil. Methane gas is coming out from the decomposition of wet waste, which is one of the most potent greenhouse gases. Of course, there are vectors of diseases like flies and mosquitoes which breed on all this wet waste. So, and there's so much of toxic hazardous waste which is also on the landfill. So you have sanitary waste, you have all the COVID masks, gloves, you have sharps, you have battery waste, e-waste, you name it, everything that the city uses is dumped in the landfill. So it's not just polluting the commons, but it's also very, very hazardous to the people, specifically if I talk about the informal waste picking sector. ये टेंडर जो है हमें नवंबर में अवार्ड हुआ है, इन द मंथ ऑफ नवंबर, और तब से हमें यहाँ पे बायो माइनिंग और बायो रिमेडिएशन का काम कर रहे हैं। डेडलाइन 18 महीने है कि 18 महीने में इस खत्ते का जो भी कचरा है उसको प्रोसेस करके उसको डिस्पोज ऑफ करना है। और इस खत्ते पे जैसे जो लिगेसी वेस्ट है उसको पहले हम बायो रिमेडिएट करते हैं, उसको बायोकल्चर वगैरह डालते हैं, डाल करके उसमें जो भी अनडिकम्पोज्ड जो वेस्ट है उसको फिर डिकम्पोज करते हैं, स्टेबलाइज करते हैं, और स्टेबलाइज करके हमारे पास जर्मनी से इंपोर्टेड क्लीमेन की स्क्रीनिंग मशीन्स है। उन मशीन्स में हम उसके भीतर जो 80 to 85% या कभी कभी 90% भी इनर्ट जो आ रहा है उस इनर्ट को हम अलग करते हैं। और इनर्ट के साथ साथ हमारे दूसरे बेल्ट्स पे आपके CND का फ्रैक्शन आता है, RDF आता है, तो उसको भी हम अलग करते हैं। तो उसको प्रोसेस करके हम RDF को अलग करते हैं, CND को अलग करते हैं, इनर्ट को अलग करते हैं। इनर्ट हम हाईवे के जितने प्रोजेक्ट्स हैं यहाँ पे दिल्ली के आसपास, उस हाईवे के प्रोजेक्ट्स में इनर्ट को भेज रहे हैं जो रोड कंस्ट्रक्शन के काम में आ रहा है। ये प्रायः 85 to 90% मटेरियल ओखला के खत्ते पे इनर्ट है और वो निकाल करके हम हाईवे को दे रहे हैं। अब खत्ता तो फिलहाल पहले तो ठीक था, अभी खत्ता ऊंचाई की वजह से बंद कर दिया। जो ऊंचाई ज़्यादा हो रहा है पब्लिक शिकायत कर दिया, तो इसलिए बंद कर दिया। और बंद करने से पहले हमको कुछ काम फाम देने चाहिए, कुछ दिया नहीं, टोटल डायरेक्ट ही बंद कर दिया। अभी काम बंद हो गया, मैं काम पे नहीं गया, मेरा घर वाला नहीं मशीन बैठा है वहाँ पर काम कर रहा है। कहाँ पे? इधर मशीन जो खत्ते हाँ, पे है? खत्ता पे जो मशीन नहीं लगा हुआ उसमें मेरा घर वाला काम कर रहा है। अब बंद हो गया, मैं गया नहीं, 2 महीने से ऊपर हो गया, मैं गया नहीं। धीरे धीरे उस टाइम तो माल का रेट कम था, तो अब भी इंसान को ज़्यादा गुजारा हो गया था। उस टाइम माल का रेट जो प्लास्टिक डब्बा इनका रेट 12-13 रुपया था, तो उस टाइम माल ज़्यादा मिलता था तो फर्क नहीं पड़ता है। इस टाइम रेट हो गया तो माल मिलता ही नहीं। Imagine when you pass a dhalao or a garbage dump, you have to close your nose. People who are working 24/7 on a landfill, you can imagine they have headaches, they have nausea, they have gastroenteritis, spinal problems. I think that's a part of their daily life. So, but unfortunately, the city is not taking care of them. We are not including them, we are not integrating them into our waste management systems. So, they don't have a choice but to work in these hazardous areas. So what the government should really be doing is to acknowledging these people who are recycling about 15 to 20% of all waste that is generated in a city and diverting it from landfills. So basically what we are talking about is resource recovery. So waste to energy plant, the whole word is the name is a misnomer. It's basically a waste management tool. It doesn't really produce much electricity. The way electricity produced is negligible. It doesn't take care of any of our electricity needs in the city.
और अब जो वेस्ट टू एनर्जी प्लांट्स हैं उसमें काफ़ी हद तक काफ़ी सारा कूड़ा उसमें सीधे भी जा सकता है। 8100 टन्स कूड़े में से काफ़ी वेस्ट टू एनर्जी में ही जा रहा है। A certain kind of waste to run a waste to energy plant. It has to be high calorific waste. So according to GIZ, the kind of calorific waste that a waste to energy plant needs is 1800 kilocalories per kg. But Indian waste is low in calorific value, is high in moisture content and is less than 1500 kilocalories per kg. So how is this technology going to work in India? Plant started functioning in 2011. Now, we knew the dangers. I mean, you see, this is a colony full of doctors, engineers, chartered accountants, professionals, very peace-loving people. I mean, you know, they're just very ordinary people, but they are qualified people. So, of course, burning garbage, which is the dirtiest possible fuel. You can burn coal, oil, gas, but if you start burning garbage, you're going to produce a lot of pollutants. You're going to burn all this waste. What are you going to do, number one, with the emissions? You are unable to control the emissions. Delhi is already the most polluted city in the world. Objective is to get it moved from here, from the residential. Yeah? It is the proximity to the densely populated areas where the real problem is. We are not fighting against waste to energy plants throughout the country. Patients who I am dealing with, my pregnant patients, they are suffering from constant mild headaches, a lot of breathlessness, itching in the skin, a lot of dermatitis, lesions on the skin, and many other problems. WTE plant is adding to the woes which Delhi is already having, being the most polluted city. The pregnant women especially have a low immunity, and this plant is worsening the condition. Human tendency that we look for some quick fixes for any problem. Waste management is a problem which cannot be solved with such temporary solutions. So if there is a fire in the landfill, we start talking about how do we get rid of the methane. We will not talk about let's not create landfill so that there won't be. So we are not talking about preventive measures, we are talking about how to control it. First of all, if you look at the size, Delhi is such a big city, it's huge. But at the same time, I think the three things which are extremely important to establish a sustainable solid waste management system, ecosystem in a city is political willingness, administrative willingness and community participation. So these three things are the pillars of waste management in any city, and also the very fact that source separation is something which is non-negotiable. सेग्रीगेशन एट सोर्स भी होना चाहिए, सेग्रीगेशन घरों में भी हो सकता है, सेग्रीगेशन कई घरों में होता नहीं है बिकॉज ऑफ एकदम से पूरे शहर का कल्चर चेंज करना इट्स नॉट पॉसिबल. And by segregation, we don't mean that you put it all together in one bin and then everybody has to sift through their waste. It is just that at the start itself, the waste is kept in a separate allocated space so that you're not mixing it all up. Because the moment you mix it up, it's not a resource anymore. Because we need the organic waste to come here to our compost plant. We want the dry waste to go into recycling. We want all the paper and the cardboard and the metal to go separately. What we should be aiming for is zero waste communities as opposed to garbage free cities. So zero waste communities will mean where the communities take care of the waste. So whether it is composting locally or selling the recyclables to kabadiwalas, that is how the community takes care of its waste. So that would be a better aspiration to have than a garbage free city.
And also we should not be looking at mechanized options. Waste pickers in the country who are doing an excellent job of recycling, why are we not supporting them and upgrading their businesses, hand-holding them and getting them into the waste management systems?